Hello, so I am trying to cover a full pathology. Today we will learn chapter 1, cellular response to stress and toxic insult. We started up with discussion of general pathology. What we are going to be having discussion of now is going to be first and relatively easiest topic in general pathology. Why we need to understand about the cell injury, which is going to be cell injury. But why we need to understand? Because any disease taking place in the human body at a microscopic level is because of tissue are not functioning properly. Why are tissue not functional properly? Why our tissue is not functional properly? Because um, tissue are not functional properly because cell are damaged and cell are not able to functional properly. What kind of injury to damage cells or tissue? Injury to cell can be because of physical barrier. Example of physical barrier is temperature. If too high temperature, person going to suffering from burn injury, and less than normal temperature, sub-zero temperature, sub-zero temperature or frostbite. Second exposure or second injury of the cell injury is exposure to chemical means contact with something, poisons, toxins or drugs like inhalation, ingestion or skin contact. And exposure to third one is exposure to infection. Exposure to infection is microorganism like bacteria, virus, fungi, protozoa, parasites which can causing injury and damage at the level of the cell. And exposure to infection like someone person is coughing, so produce sputum produce or particles produce, so is causing infectional exposure. And genetic factors various in genetics or hereditary genetic reaction, development of injury of the level of the cell. Any kind of genetic disease, it's happen the cell injury. Most common cause of injury at the level of cell injury is hypoxia. If you just break that word, hypo, hypo means less, oxia means O2, less O2. When cell is having a less O2 with it for its purpose of utilization, that is called hypoxia. What would cause it this hypoxia? Order to understand that, we just revisit and brush up our physiology. What would cause this hypoxia? Order to understand that, we just revisit and brush up our basic physiology. So what we can remember over here, a person is breathing in air, this air going to be contain O2, O2 going to be diffusing from the alveoli into the blood. So person in the blood we have going to be having presence of RBC. RBC would contain inside the presence of hemoglobin. This hemoglobin is going to be combining with oxygen that is available from the fusion process, which O2 diffusion with hemoglobin, it is going to be result formation of oxyhemoglobin. Once oxyhemoglobin is produced, present
present, this oxyhemoglobin is going to be now go to the different cell tissue. Let's say this is a cell. Once O2 comes over here, this O2 is going to diffuse to the cell, and now cell going to be utilized this oxygen. There are important steps how to utilize oxygen. पर्सन ब्रीथिंग करता है और लंग्स थ्रू एल्वियोलाई थ्रू ब्लड में जाता है, ब्लड में आरबीसी होते हैं, हीमोग्लोबिन. ओके, सो ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन कंबाइन होके ब्लड थ्रू सेल में जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ओके, देन which is four-step pathway. First, entry of oxygen inside the lung, you can see the image. Second, formation of oxyhemoglobin. And third, flow of blood taking the oxygenated blood to the cell. And fourth is oxygen being utilized at the level of the cell. Okay, now we gonna start is commonest cause of hypoxia. Commonest cause of hypoxia is pneumonic as harsh. Okay, H means hypoxic hypoxia, E means anemic hypoxia, S means wait, stagnant hypoxia, H means histotoxic hypoxia. So first is hypoxic hypoxia. So person breathing air less amount of oxygen. Okay, hypoxia means hypo means less, oxia means O2. Okay, so hypoxic hypoxia high altitude, which means किसी भी हिल स्टेशन में या वहाँ जाते हैं तो एल्डरली पीपल को ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है. सो हाई एल्टीट्यूड में हाइपोक्सिया हो सकता है. एंड COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज में. Which is four-step pathway. First, entry of oxygen inside the lung, you can see the image. Second, formation of oxyhemoglobin. And third, flow of blood taking the oxygenated blood to the cell. And fourth is oxygen being utilized at the level of the cell. Okay, now we gonna start is commonest cause of hypoxia. Commonest cause of hypoxia is pneumonic as harsh. Okay, H means hypoxic hypoxia, E means anemic hypoxia, S means wait, stagnant hypoxia, H means histotoxic hypoxia. So first is hypoxic hypoxia. So person breathing air less amount of oxygen. Okay, hypoxia means hypo means less, oxia means O2. Okay, so hypoxic hypoxia high altitude, which means किसी भी हिल स्टेशन में या वहाँ जाते हैं तो एल्डरली पीपल को ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है. सो हाई एल्टीट्यूड में हाइपोक्सिया हो सकता है. एंड COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज में. इंटरस्टिशियल लंग्स डिसीज. एंड राइट टू लेफ्ट शंट्स. राइट टू लेफ्ट शंट का मीनिंग क्या है? डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है ना, मतलब O2 ब्लड में नहीं होता. O2 रिमूव फ्रॉम ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड सिस्टेमिक वेनस ब्लड टू बाईपास द लंग्स एंड रिटर्न टू द बॉडी. सो ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है, मीन्स कि डीऑक्सीजनेटेड है. तो राइट टू लेफ्ट शंट्स में जाता है, मतलब हाइपोक्सिया होता है.
and anemic hypoxia due to decreased hemoglobin, जिसमें जिन लोगों में अनीमिया होता है उनमें अनेमिक हाइपोक्सिया का चांसेस ज़्यादा है। एंड anemia means bloodless. Altered hemoglobin means non-functional hemoglobin, non-functional abnormal hemoglobin. Classical example I can share with you: suffering from carbon monoxide poisoning, especially in winter weather, by using room heater, formation of carbon monoxide gas, and it will combine with hemoglobin, resulting formation of carboxyhemoglobin. सो कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है। ओके, कार्बन मोनोक्साइड एंड हीमोग्लोबिन बाइंड होता है तो कैन नॉट ट्रांसफर O2, विच मीन्स carbon monoxide and hemoglobin is example of non-functional hemoglobin. Okay, when iron in the hemoglobin gets altered, which state iron is present is normal hemoglobin. It's फेरस स्टेट में आयरन प्रेजेंट होता है, बट फेरस ऑक्सीडेशन में फेरिक कन्वर्जन हो जाता है, मीन्स कि Fe+2 का ऑक्सीडेशन Fe+3 होता है, and this oxidized iron condition hemoglobin is called methemoglobin. And just like carboxy hemoglobin, methemoglobin, example of non-functional hemoglobin. So which topic we discussion about? 3 non-functional hemoglobin. Okay, first, carbon monoxide bind to hemoglobin, formation of carboxyhemoglobin. Second condition is iron in the Hb get altered. Normally iron present is ferrous form, Fe+2 form, but Fe+2 is oxidation Fe+3. Okay, Fe+3. So methemoglobin convert. And third condition is patient having anemia. Okay, so these 3 condition, anemia and non-functional hemoglobin or altered hemoglobin में carbon monoxide poisoning and methemoglobin. Methemoglobin always newborn on exposure to drug like nitrate, sulfonamide and local anesthesia. Methemoglobin always individual cytochrome B5 reductase deficiency. If मतलब किसी को भी साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज की डेफिशिएंसी होगी तो वो फेरिक में से फेरस स्टेट नहीं हो पाएगा, मीन्स फेरस टू फेरिक कन्वर्जन में
मतलब साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज मीन्स डेफिशिएंसी होगी तो Fe+3 टू Fe+2 में नहीं हो पाएगा, वो मीथ हीमोग्लोबिन हो जाएगा। सो इफ किसी को भी साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज की डेफिशिएंसी नहीं है तो वो फेरिक टू फेरस कन्वर्सन हो सकता है। सो उनको मीथ हीमोग्लोबिन नहीं होगा। सो अनेमिक हाइपोक्सिया चांसेस बहुत कम है। Which reason in myth hemoglobin formation? Which reason? These reasons. Because there are children exposed and curtain certain drugs. What are those drugs? Nitrite or sulfonamide and local anesthesia. And cytochrome B5 reductase एक एंजाइम है, मीन्स कि NADPH डिपेंडेंट एंजाइम है। NADPH साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज NADH डिपेंडेंट एंजाइम है एंड रिएक्शन बाय IV मीन्स इंट्रावेनस मिथिलीन ब्लू रिडक्टिंग एजेंट है। सो मिथिलीन ब्लू है ना, वो ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन कन्वर्टिंग फेरिक आयन बैक टू O2 कैरिंग फेरस स्टेट, विच मीन्स अगर किसी में साइटोक्रोम B5 रिडक्सेज की डेफिशिएंसी है तो हम इंट्राविनसली मिथिलीन ब्लू, वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो है ना फेरिक Fe+3 टू Fe+2 में कन्वर्ट कर सकता है। सो उसमें एनीमिया का चांसेस नहीं है, इसलिए ये ट्रीटमेंट होगी। नाउ थर्ड हाइपोक्सिया इज स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। Stagnant hypoxia means capillaries to blood supply tissue is altered, decrease in availability of blood. Hypoxia is called stagnant hypoxia, means slow circulation like obstruction in arterial vessel. We can see here arterial obstruction is ischemic through and venous vein में obstruction होगा तो congestion. But most common cause of stagnant hypoxia is ischemic. Ischemia means low blood. So stagnant hypoxia ischemia थ्रू होता है। And fourth is histotoxic hypoxia. So cyanide क्या करता है? साइटोक्रोम को इनिबिट करता है एंड ऑलवेज IV नाइट्रोप्रोसाइड लॉन्ग टर्म यूज जो होता है वो, एंड साइनाइड पॉइजनिंग है वो ऑलवेज ब्रिक रेड डिस्कलरेशन, ब्रिक मीन्स टैन टाइप, ब्राउन रेड टाइप, एंड दिस ऑल आर ट्रीटमेंट बाय B12 methylcobalamin and amyl nitrite and sodium thiosulfate. Most common cause of hypoxia is ischemic. Most common cause of cell injury is hypoxia. Cause of ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने 4 टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया पढ़े हैं। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया में पर्सन जब ब्रीथिंग लेता है तो ऑक्सीजन लेस अमाउंट ऑफ लंग्स में जाता है, उसको हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कहते हैं। हाई एल्टीट्यूड मीन्स कि हाई हिल्स में जाए एंड हिल्स माउंटेन में जाए एंड ऑक्सीजन की परेशानी हो, और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ में एंड राइट लाइफ शंट्स। अनेमिक हाइपोक्सिया में क्या होता है? Hypoxia can be that oxygen from the lungs is going to be combining with hemoglobin, okay, but hemoglobin ही कम है, so उसको कहते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें 3 तरह के अल्ट्रेशन देखने मिलते हैं, 2 अल्ट्रेशन, 1 इज अनेमिया के कारण, सेकेंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड मीथ हीमोग्लोबिन। एंड जिसमें मीथ हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है वो Fe+3 टू Fe+2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता,
मतलब हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, मीट हीमोग्लोबिन हो जाता है। एंड आईवी मिथिलिन ब्लू देते हैं तो Fe+3 में Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया मीन्स प्रॉब्लम ब्लड फ्लो में है, स्टैग्नेंट ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम है, इसमें इस्चेमिया। आर्टेरियल में ऑब्स्ट्रक्शन, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन में कॉन्जेशंस, वेन और वेनस। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, हिस्टो मीन्स सेल, टॉक्सिन सेल में ऑक्सीजन की कमी हो, कि मतलब उसमें कमी हो, क्योंकि साइनाइड जो है वो साइटोक्रोम को इनहिबिट कर देता है। एंड इंट्रावेनस नाइट्रोप्रोसाइड लॉन्ग टर्म यूजिंग है। एंड साइनाइड पॉइजनिंग और ब्रिक रेड टैन होता है, एंड रेड डिस्कलरेशन होता है। एंड एमाइल नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट एंड B12 treatment है। Most common cause of hypoxia is ischemia. Okay, most common cause of cell injury is hypoxia. Now we gonna talk severity of injury affected by natural of the cell and duration. Look at here, injuries agent, two types of. First is adaptation, second is cell injury. What is adaptation? Means short duration given the time for the cell or tissue to change where they are functioning, changing where they are functioning. Look at the injuries agent. First is adaptation, second is cell injury. Adaptation means giving the time for the cell or tissue, changing way they are functioning, and the cell injury is a stressful, long duration, and do not adaptive themselves, suffering from cell injury. Cell injury either two types, reversible or irreversible. Irreversible means नाम से ही पता चल रहा है सेल डेथ हो जाएंगी. एंड सेंसिटिविटी ऑफ सेल इन बॉडी टू एनी काइंड ऑफ इंजरी. न्यूरॉन है ना मोस्ट सेंसिटिव है, 2 मिनट में ही इंजरी हो जाती है मतलब. एंड देन कार्डियक फाइबर 20 मिनट्स लगता है. फिर स्केलेटल मसल फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट मोस्ट रेसिस्टेंट. ये सब ऑर्गन्स है. तो न्यूरॉन मोस्ट सेंसिटिव है तो इंजरी जल्दी से हो जाती है. तो CNS, फिर कार्डियक फाइबर, फिर स्केलेटल मसल फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट. सो CNS इज Purkinje cell in cerebellum. तो एंड कार्डियक टिश्यू में सब एंडोकार्डियल एरिया एंड JIT में स्प्लेनिक फ्लैक्चर. Easy to remember these organs. Now we gonna talk about reversible cell injury. Look at here. Cell injuries either divided two types, reversible and irreversible. So reversible cell injury. Reversible cell injury में if oxygen hypoxia हो रहा है मीन्स ऑक्सीजन लेस, तो माइटोकॉन्ड्रियल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल होता है, वो ATP जनरेट करता है. तो माइटोकॉन्ड्रियल अफेक्ट हो रहा है तो ATP भी लो हो जाएंगी. अब ATP लो है तो कौन कौन से सेल के पार्ट्स में डिफेक्ट हो गए, सेल मेम्ब्रेन में एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मिस्ट्रिकल चेंजेस मीन्स कि न्यूक्लियस में. तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में भी अगर हमें हाइपोक्सिया हो रहा है तो ATP भी लो होगी. ATP क्यों लो होगी? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल इफेक्टेड है. सेल मेम्ब्रेन में ATP लो हो रहा है तो सोडियम एंड पोटेशियम पंप की एक्टिविटी लो हो रही है. क्यों सोडियम एंड पोटेशियम पंप की एक्टिविटी लो हो रही है? So this is a cell. This is the sodium potassium pump.
in the cell membrane. ये सेल में 3 सोडियम बाहर जाते हैं तो 2 पोटेशियम अंदर आते हैं. सोडियम एंड पोटेशियम पंप ही खराब है, इफेक्टेड है, एक्टिविटी ही नहीं है, तो फिर सारे सोडियम अंदर रह जाएंगे. ओके, तो सोडियम इनसाइड द सेल इज इंक्रीज. बट पहले ये देखते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम की रेशियो क्या है. 3:2. ये रेशियो हमें याद रखना है क्योंकि 3 मीन्स 3 सोडियम, 2 मीन्स 2 पोटेशियम. 3:2 रेशियो है. सो सोडियम एंड पोटेशियम की पंप की एक्टिविटी लो है, तो सोडियम इनसाइड द सेल इंक्रीज, अभी मैंने बताया. सो वाटर इनसाइड इंक्रीज. वाटर क्यों इनसाइड इंक्रीज हुआ? क्योंकि इंक्रीज सोडियम इनसाइड द सेल तो लूज वाटर लूज होता है बाय ऑस्मोसिस, और श्रिंकन के कारण वाटर लूज होता है. तो सोडियम is dangerous in part because it lead the body retain water, means water increase करेगा. सो सेल्यूलर स्वेलिंग होगी, वाटर ज़्यादा अंदर चला गया तो सेल्यूलर स्वेलिंग होगी. एंड हाइड्रोपिक चेंजेस हो गए. हाइड्रोपिक चेंज किसे कहते हैं? ब्लीप फॉर्मेशन किसे कहते हैं? लूज ऑफ माइक्रोइलाई एंड माइलिन फिगर. सो इनसाइड ज़्यादा हो गया तो स्वेलअप हो गया, तो उससे क्या होगा? हाइड्रोपिक चेंज, सेल्यूलर स्वेलिंग, और एक नाम ये है कि नॉन लिथल इंजरी एंड वैक्यूल्स डिजनरेशन भी नाम है. एंड swelling of the organism as well as increase of cell and damage inside, and spiral suction can be seen intracellularly more commonly. You can just see, this is the myelin figure, cylindrical structure, and myelin figure derived from plasma and observe electron microscope. This image is absorbed electron microscope. And myelin figure made up of phospholipid. Okay, myelin figure made up of phospholipid. So मैं क्वेश्चन करती हूँ, what is the cations responsible for hydropic changes? ये hydropic changes हुआ, which cation? सोडियम या पोटेशियम? ऑब्वियसली सोडियम के कारण वाटर रिटेंशन हुआ, तो सोडियम के कारण ही हुआ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में माइक्रोसोम्स होते हैं एंड रफ में यू कैन सी रफ एंडोप्लाज्मिक में एटीपी डिक्रीज हो गई तो रिबोसोम्स ब्रेक हो जाते हैं, रिबोसोम्स टूट जाते हैं. सो डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड मिसफोल्डेड प्रोटीन accumulation. And third is ब्लीप फॉर्मेशन मीन स्मॉल ब्लिस्टर. ये सेल है, इसकी इंजरी होगी तो मतलब फ्रैगमेंट होगा, स्मॉल ब्लिस्टर हो जाएगा, उसको ही कहते हैं ब्लीप फॉर्मेशन. हाइड्रोपिक चेंजेस मीन लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई.
lost blood supply leads to decreased oxygen टेंशन इनसाइड द सेल डिक्रीज होगा तो रिजल्ट एटीपी डिप्लेशन मीन्स की एटीपी लेस तो लॉस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कॉजिंग डिक्रीज एटीपी जनरेशन एंड फेलर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप माइलिन फिगर ये इमेज में देख सकते हैं स्मॉल एंड स्पाइरल फ्रेगमेंट derived either from cell membrane and membrane of organism. सो न्यूक्लियस में देखते हैं पहले इसमें ऑक्सीजन लो है लेस अवेलेबल O2 so cell going to utilize substrate glucose and glucose by the process of glycolysis responsible for the formation of pyruvic acid is actually entered the TCA and Krebs cycles. So here can this is the cell, oxygen is low, so glucose going to utilize by process of glycolysis, okay, and if less available O2 and formation of pyruvic acid, so formation of so less available O2 होता है and formation of pyruvic acid not enter into Krebs cycle or any TCA cycle क्योंकि decrease oxygen ही कम है and concentration of pyruvic acid inside the cell going to accumulate. So pyruvic acid going to transfer lactic or lactic acid. This is the cell, oxygen is decreased, so oxygen is decreased, the substrate glucose by the process of glycolysis and responsible for pyruvic acid, and then less availability of oxygen, so pyruvic acid are not enter into Krebs cycle or TCA cycle. Pyruvic acid accumulation, increase in pyruvic acid, increasing pyruvic acid and formation of lactic acid. So lactic acid is also increasing. Lactic acid, lactate and lactic acid. Lactic acid, okay. So if we see the diagram, this is pyruvic acid, okay. Pyruvic acid accumulation, pyruvic acid increase to produce lactic acid increase, okay. And if अगर O2 ज़्यादा होते तो क्रेब्स साइकिल में जाता और TCA साइकिल में जाता बट O2 ही लेस है सो पायरुविक एसिड ज़्यादा होगा तो लैक्टिक एसिड ज़्यादा होगा. इफ लैक्टिक एसिड ज़्यादा होगा तो एसिडोसिस डेवलप होगा मीन्स डिक्रीजिंग पीएच. मैंने बोला डिक्रीज इन पीएच होगा एसिडोसिस, ओके. सो न्यूक्लियस में देखते हैं ये है होमोजीनियस अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस नॉर्मल कंडीशन एंड एसिडोसिस होने के बाद क्लम्बिंग ऑफ क्रोमैटिन पैची डिस्पोजिशन ऑफ क्रोमैटिन पैची दिख रहा है कॉलोनी टाइप
एंड सेकेंड इज लीवर। लीवर में फैटी चेंजेस होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, वाइट वाइट राउंड राउंड लिपिड। एंड देन थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रियल and amorphous density, which means increase calcium in mitochondria to ATP कम होगी. Now we gonna talk very important topic, irreversible cell injury. Irreversible cell injury two types के होते हैं, mitochondrial dysfunction and necrosis. माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन में साइटोक्रोम सी लीकेज इनटू साइटोप्लाज्म. अभी हमने पढ़ा था कि साइनाइड वो इनहिबिट कर देते हैं साइटोक्रोम को, बट साइटोक्रोम सी है लीकेज इनटू साइटोप्लाज्म. तो मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हो गया तो एपोप्टोसिस होगा, तो सेल डेथ हो जाएंगी, मतलब सेल की डेथ हो जाएंगी. एंड सेकेंड कंडीशन इज नेक्रोसिस. तो एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ द सेल, मीन्स प्री प्लान. वो प्लान किया होता है, ये सेल मरने ही वाला है, मतलब प्लान है, प्री प्लान है, इसको कहते हैं एपोप्टोसिस. ओके, मतलब कई जगह पे हमें घाव हुआ, मतलब कई चोट आई, वो घाव वो चोट को ठीक होने में, हील होने में वो सेल को रिमूव करना पड़ता है. ये पहले सेल हेल्दी होते हैं, बट हमें वहाँ चोट लगी तो वो सेल को हील होने में तो ये सेल को रिमूव करना पड़ेगा. तो ये सेल पहले ऐसे होते हैं एंड देन ये सेल ऐसे हो जाते हैं, मतलब साइटोस्केलेटल हिल जाता है, जिगजैग स्ट्रक्चर हो जाता है उसका. एंड देन स्मॉल स्मॉल पीसीस में लोब्स बन जाते हैं. एंड हमारा फेवरेट दोस्त फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइट सेल्स होते हैं, वो ये छोटे छोटे जो लोब्स है उसको खा जाता है, ईटन अप हो जाता है. तो ये प्लान किया है, एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड है ये सब. ओके, एंड नेक्रोसिस मीन्स अनप्रोग्राम, सडन डेथ ऑफ द सेल. ओके, सडनली डेथ ड्यू टू hypoxia, एनर्जी डिपेंडेंट कैल्शियम पम्प फेल्स. इफ़ एटीपी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो कैल्शियम पम्प जो एनर्जी पे डिपेंड करते थे वो फेल हो जाएंगे. एंड इंक्रीज कैल्शियम इनसाइड द सेल, इंक्रीज हो जाएंगे. तो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, एंजाइम एक्टिवेशन थ्री टाइप्स के होते हैं, लाइसोसोमल, फॉस्फोलाइपिड एंड न्यूक्लियस. फर्स्ट लाइसोसोमल एक्टिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिवेशन होगा तो सेल डेथ ही होगा. सेकेंड न्यूक्लियस एक्टिवेशन में 3 होगा. एंड थर्ड इज फॉस्फोलाइपेज. पहले हम फॉस्फोलाइपेज देखते हैं. फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन होता है तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है. सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो हम एग्जांपल लेके देखते हैं. कार्डियक सेल है. ओके, तो ये रिवर्सिबल सेल इंजरी होता है कार्डियक सेल में भी, और इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल में सेल बिकम बिगर, मीन्स हार्ट बिग हो गया, बिग हार्ट है. सो नो मेम्ब्रेन डैमेज. अगर मेम्ब्रेन डैमेज ही नहीं है, जो तो ट्रोपोनिन है सेल हार्ट के अंदर, वो बाहर ही नहीं आ पाएगा, तो एंजाइम वॉन्ट लीक आउट. एंड एंजाइम लेवल नॉर्मल इन ब्लड. अगर वो एंजाइम हार्ट के अंदर ही है, वो लीक ही नहीं हो रहा, तो नॉर्मल लेवल ही होगा. उसको वो कंडीशन को कहते हैं एंजाइना. ओके, एंड सेकेंडली है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, मेम्ब्रेन डैमेज. जो ट्रोपोनिन हार्ट के अंदर है वो बाहर आ जाता है, तो ट्रोपोनिन का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है. किन कंडीशन में ये ट्रोपोनिन लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI. एंड थर्ड हम बात करते हैं न्यूक्लियर एक्टिवेशन. ये नॉर्मल न्यूक्लियस ऐसे होते हैं, यू कैन सी. ओके, एंड पिक्नोसिस मीन्स
इंक डॉट न्यूक्लियस, ये सेकंड इमेज में देख सकते हो, पिंक डॉट किया है ना किसी ने, वैसे न्यूक्लियस है। एंड थर्ड है कैरियर एक्सिस, मीन्स न्यूक्लियर फ्रेगमेंट दिख रहे हैं थर्ड वाली इमेज में। एंड फोर्थ है कैरियोलाइसिस, मीन टोटल, लाइसिस मीन्स ब्रेक, मीन्स डेथ, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में नॉर्मल न्यूक्लियर में एसिड हो, नॉर्मल न्यूक्लियस में एसिड होता है तो सिंगल बैंड दिखता है, अपीयर है सिंगल बैंड। नेक्रोटिक न्यूक्लियस में एसिड दिख रहा है तो समियर पैटर्न्स। एंड एपोप्टिक न्यूक्लियर में एसिड दिखता है तो अपीयर एज स्टेप लैडर पैटर्न। स्टेप लैडर पैटर्न मीन्स ऐसे स्टेप लैडर, यू कैन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस स्टेप लैडर पे स्टेप वाइज पैटर्न दिख रही है इस इमेज में, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ओके, एपोप्टोसिस के बारे में एक बात बताती हूँ कि अर्ली स्टेज में हमारी फिंगर्स होती है ना, उसमें डेड सेल होते हैं, मतलब हमारी फिंगर्स जैसे मंकीज एंड उनमें नहीं होते, ये हमारी, मतलब मुझे अभी परफेक्टली नहीं आ रहा ड्रॉ करने में, बट ये फिंगर है। तो पहले ये सब जॉइंट था, जब हम फीटल लाइफ में थे तो ये सब जॉइंट था। तो यहाँ जो सेल थे ना वो डेड सेल है, डेड सेल थे। तो ये डेड सेल रिमूव एपोप्टोसिस के कारण हुआ है। ओके, एंड एपोप्टोसिस के कारण हुआ है, पर ये डेड सेल को ईट करता है फेगोसाइटिक सेल, फेगोसाइटिक सेल कहते हैं उसको। पर अभी हमारे फिंगर के बीच में ऐसी कोई मसल्स और डेड सेल नहीं है, इसलिए हम फिंगर भी मूव कर पा रहे हैं। ओके, एंड एपोप्टोसिस टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस एंड एक होता है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मीन्स बाहर से कोई केमिकल या कुछ इंजरी हुई तो फिर एपोप्टोसिस हो जाएगा और फेगोसाइट ईट करने आ जाएगा। एंड इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस हुआ मीन्स अंदर से कोई जेनेटिकली या फिर कोई भी केमिकल एक्सपोजर, एनी वे हाउ, सो एपोप्टोसिस हो गया और ईटन अप करने फेगोसाइटिक आ जाएगा। नेक्रोसिस के बारे में एक और बात बताना चाहूँगी। जो कैंसर होते हैं ना हमारे में, वो प्रोग्राम थोड़ी ना होते हैं कि वो अनप्रोग्राम होते हैं, वो खुद में खुद अनप्रोग्राम होते हैं, वो नेक्रोसिस के कारण होता है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्रोसिस के किन किन, मतलब कौन से टाइप के नेक्रोसिस होते हैं। मेनली फर्स्ट टाइप है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड है लिक्विफैक्टर, थर्ड है केसियस, फोर्थ है फैट नेक्रोसिस एंड फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। 5 टाइप्स के नेक्रोसिस है। फर्स्ट टाइप के नेक्रोसिस में मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस ये है, इस्चीम या लो ब्लड के कारण ये कोआगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है। एंड इनएक्टिव ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक के कारण हाइड्रोलाइटिक इनएक्टिव एंजाइम हो जाता है। एंड टॉमस्टोन appearance, you can see this image over here, tombstone appearance. And commonly all organs except CNS, ब्रेन के अलावा सारे पेरिफेरल, सारे ऑर्गन में कोआगुलेशन नेक्रोसिस देखने को मिलता है। जेनकर्स
degeneration, coagulation, necrosis in skeletal muscle. टाइफॉइड में मीन्स कोएगुलेटिव नेक्रोसिस skeletal मसल में जेनकर्स डिजनरेशन कंडीशन में देखने को मिलता है. कॉमनली ऑलवेज न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन and infraction means infract all localized area due to ischemia, triangular shape, and infraction. Infract is short name, but infraction is called apex of infract, pointing the direction of the site of obstruction. This is apex infract है and base is this area is base. apex infract pointing the direction of site. ये पॉइंटिंग वाला है वो एपेक्स है, ये पॉइंटिंग वाला एरिया है ये एपेक्स है. तो वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होती है. ओके, सो वाइट infract and red infract. White means कि end arterial blood supply particularly solid organ कौन से हार्ट एंड किडनी. एंड रेड infract यहाँ देख सकते हो वाइटिश एरिया यहाँ और ये रेड आप देख सकते हो यहाँ रेड, ये रेड है और ये वाला भी रेड है बेसल एरिया. and whitish area heart and kidney, and red infract in loose connective tissue में देखने को मिलता है. dual blood supply like lungs and liver. okay. तो white infraction वो apex pointing towards near medulla में होता है ये infraction. okay, so white infection heart and kidney, red infection lungs and liver. Now we gonna up to second necrosis is liquefaction. liquefaction CNS में होता है and हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेशन के कारण होता है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनएक्टिवेशन के कारण होता है. so damage tissue architecture and example of CNS ischemic. कोएगुलेशन नेक्रोसिस मैंने बोला वो सारे ऑर्गन में होता है, CNS में नहीं होता. लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस CNS में होता है. इन्फेक्शन पोस्ट फॉर्मेशन, you can see this image, post formation like image, and streptococcus aureus infection से ऑलवेज ये लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस देखने को मिलता है. एंड थर्ड इज केजेसियस नेक्रोसिस. केजेसियस इज लाइक चीज like necrosis material, structure outline not preserved. coagulative necrosis and liquefactive necrosis बोथ का मिक्सचर है. तो मतलब ये CNS में भी है और सारे ऑर्गन में भी हो जाता है. coagulation necrosis prominent contributor, प्रोडोमिनेंट है. सी इन टीबी में देखने को मिलता है. फंगाई एंसेफिलस, इसमें ग्रैन्युलर फॉर्मेशन होता है, वो प्रेजेंट होता है. ग्रैन्युलोमेटोस रिएक्शन भी प्रेजेंट होता है. एंड मोनोसाइट लिम्फोसाइट होता है. और वो कोएगुलेटिव में कौन सा था, न्यूट्रोफिलिक, इसमें है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. Langer has giant cell. This image in big cell is giant cell. Okay, and cheese like image. Okay, and fourth necrosis is fat necrosis. Fat necrosis is high fat or lipid activation. Injury to breast tissue, injury to omentum tissue and pancreatus. What is omentum?
stomach, small and large intestine, large bowel. एग्जाम्पल स्टॉप पेनक्रियाटिस किस कंडीशन में होता है तो अक्यूट पेनक्रियाटिस कॉल gallstones and chronic pancreatitis. The commonest cause something like अल्कोहल इंटेक अल्कोहल इंटेक के कारण पेनक्रियाटिस हो सकता है. एंड ओमेंटम टिश्यू इंजरी तो मैंने बता दिया. स्टमक एंड बोवेल स्मॉल एंड लार्ज बोवेल में pancreatic inflammation तो enzyme inside the pancreatis lipase enzyme. ओके मैंने बोला अक्यूट पेनक्रियाटिस गॉलस्टोन के कारण था एंड अल्कोहल इंटेक के. सो लाइपेज है अल्कोहल इंटेक एंड गॉलस्टोन फॉर्मेशन होगा तब लाइपेज एक्टिवेशन होगा. सो लिपिड सिर्फ फैटी एसिड बन जाएगा एंड कैल्शियम. तो हम बात करते हैं फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस. वो पैथोजेनिक है एंडोथेलियल सेल इंजरी इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड देन डैमेज टू प्लाज्मा प्रोटीन in the vessel wall inside the vessel deposition of plasma protein and fibrinoid necrosis. So damage of endothelial cell. So result क्या होगा तो लूमिन के अंदर हमें प्लाज्मा प्रोटीन मिलेगा एंड वो वेसल वॉल के अंदर चला जाएगा. सो include the plasma protein gives you hint fibrin. It can individual precursor of fibrin like fibrinogen. Deposition of pinkish material going to getting deposition in the vessel wall. You can see pinkish material is the lumen and around the lumen you can see the fibrinoid necrosis. Malignant hypertension you always see in malignant hypertension because of decrease of blood pressure or increase of blood pressure. What do you think? Malignant hypertension is sudden and severe elevation of blood pressure. Only elevated and increased blood pressure. High blood pressure is very short time. So see in fibrinoid necrosis. Edge of body you can see cardiac condition. This kind of microscopic structure name of edge of body. Rheumatoid heart disease. Example of rheumatoid heart disease. Rheumatoid heart disease बिकॉज ये कार्डियक कंडीशन में ये एज ऑफ बॉडी देखने को मिलती है इन अ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. एंड थर्ड इज इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर. इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज है वो ब्लड वेसल इंफ्लेमेशन डिसऑर्डर कंपोनेंट्स ऑफ पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा. इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर मीन्स टाइप 3 hypertension you always see in malignant hypertension because of decrease of blood pressure or increase of blood pressure. What do you think? Malignant hypertension is sudden and severe elevation of blood pressure. Only elevated and increased blood pressure. High blood pressure is very short time. So see in fibrinoid necrosis. Edge of body you can see cardiac condition. This kind of microscopic structure name of edge of body. Rheumatoid heart disease. Example of rheumatoid heart disease.
rheumatoid heart disease, बिकॉज ये कार्डियक कंडीशन में ये स्टॉप बॉडी देखने को मिलती है इन अ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. एंड थर्ड इज इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर. इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज है वो ब्लड वेसल इंफ्लेमेशन डिसऑर्डर कंपोनेंट्स ऑफ पोलीआर्थराइटिस नोडोसा. Immune complex disorder with type 3 hypersensitivity. So we just completed this topic, and part 2 we will complete this whole topics.